Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that today we will start a new unit, which is unit number 4, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And today I will give you a complete introduction of this unit. So my dear students, let's quickly see that what we are going to learn in this unit. In this unit, you will learn about Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh as a great leader and a role model for generations. You will also study his struggle in making Pakistan a homeland for Muslims. So my dear students, आज हम पाकिस्तान की एक ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के फाउंडर हैं, पाकिस्तान के ग्रेट लीडर हैं, बाबाए कौम के नाम से जाने जाते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. And we know him as Qaid-e-Azam, लेकिन उनका real name है Muhammad Ali Jinnah. So my dear students, let's quickly look at start the unit. So in lecture number 1, the students will be able to introduce Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah as the founder of Pakistan. So the page that will be included here is page number 38. So जब आप लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो कायद-ए-आज़म को बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जान जाएंगे और उसको इंट्रोड्यूस भी करवा सकेंगे कि Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. And we will study about his early life. Then we will move forward towards lecture number 2. In lecture number 2, the students will be able to narrate the major events in the life of Qaid-e-Azam, like his date of birth, founder of Pakistan, few major contributions, and date he died. So my dear students, then we will move forward towards his contribution towards the making of Pakistan. कि कैसे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को बनाने में मदद की और उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं. इसके अलावा उनकी जो लाइफ है उसके बारे में हम मुख्तलिफ डिस्कशंस करेंगे. उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की हम लोग जानेंगे. So this will be discussed in lecture number 2. Then we will move forward towards lecture number 3, and that will be a project. So we will make a project on Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इस दिन का सबको पता है. 23 मार्च 1947 को जो है रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हुई थी. ऑन दैट डे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड अ ग्रेट स्पीच. तो आप उस स्पीच के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड यू योरसेल्फ will deliver speech. And how you can deliver a speech, what are the different ways, how you can develop a speech, I will tell you, I will instruct you in this project. So my dear students, and then we will move forward towards lecture number 4, that will be the review of this unit. So my dear students, हम तमाम जो concepts हैं उनको revise करेंगे. इसके बाद मैं आपको assessment sheet दूंगी so to evaluate you that what you have learned from this unit. So my dear students, you will learn a lot of things. You will know new things about Qaid-e-Azam, and keep everybody safe around you. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.